मेरे को एस्पिरेंट से एक ही शिकायत है, टीचरों को बहुत ही मतलब गरीब हालत में दिखाए, इतने बुरे हाल नहीं है टीचर। Somebody kind of insulted me. अगर आप बिहार, यूपी और ये देखेंगे, उनका माइंडसेट होता है कि सिविल सर्वेंट बनना है। इंडिया में इतना लैक्स यूथ प्रिपेयर कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम्स को बाहर लाया जो शॉक्स। देयर इज दिस प्रॉब्लम कि हमारे वर्क कल्चर प्रैक्टिसेस में पीरियड लीव है ही नहीं। देन दे आर लाइक, मैम दिस इज द लास्ट बैच दैट वी वांट टू डू विद यू। जो स्टॉक इज डूइंग रियली गुड वर्क। Teaching is a pink collar job, but UPSC teaching we have very few. Very good. IAS is unhappy because politician is happy. IPS is unhappy because he's not IAS or she's not IAS. Everybody is unhappy. अरे यार भाई क्यों दुखी है? How is like your routine place, like you know, as a teacher, and how it is different from an aspirant? Let's start with मेरे तो बहुत ma'am. बुरे हाल है सब। No, you tell me in your case. Acha, okay. So ma'am, like my day starts by 4:30 in the morning. Okay. And I sleep by 10 o'clock. ऐसा नहीं है सर कि मैं 2 बजे सो के 4 बजे उठ रही, इतना अरे सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। तो I sleep by 9:30 10, मतलब I'm off. और अगर रात में थोड़ा एंजाइटी कभी हुआ और कभी नींद भी खुल गई तो भी आई विल इंश्योर कि मैं 4 बजे तक तो साउंड स्लीप करूँ। एंड देन बिकॉज जैसे दिन में अगर 2 क्लास हैं, एक क्लास मॉर्निंग 9 o'clock हुई और एक 2 बजे हैं, तो 12:30 बजे खत्म होगी, तो आई विल नॉट गेट टाइम टू इवन रिवाइज थिंग्स, यू नो। तो सुबह ही सारा प्रिपेयर करके दिन, और अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करोगे तो थोड़े समय बाद बच्चे को मजा नहीं आएगा, आपको डिलीवरी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर वो पूरा प्रोसेस मोनोटोनस भी हो जाएगा, इनोवेटिव भी नहीं होगा, और जिसके लिए कर रहे हो वर्दी भी नहीं होगा। Right. सो लाइक मतलब मैं आज तक मेरे एस्पिरेंट मोड से नहीं निकली हूँ, आज तक नहीं निकली हूँ। मीन्स आई डोंट नो वेदर दिस इज गुड और बैड एज टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क। ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। वो एडवांस हो गया है Right. चीजों को लिंक करने का, बट मेरा जो काम करने का तरीका है आज भी लाइक अ स्टूडेंट है। Exactly. इट हैज नॉट चेंज्ड ओनली। Right. माय लाइफ इज यूपीएससी साइकिल मैम। Yes. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वही साइकिल चलते रहता है, वो खत्म ही नहीं हुआ है। And I feel it is even more preparation than a student. वो तो है, वो तो है। Like Yeah, that's for right. example, I have 3 classes, science and technology, current affairs, for the students who are writing this mains. For those 3 classes, I started preparation in the month of June. I mean, effectively, I'm preparing for 3 months for 3 current affairs classes. Yes. Because I have to cover at The year. least last year. 6 months or 1 year current Right, affairs. right, right. I never studied so much as a student. Never। इतना पढ़े हो तो खुद 6 ही हो गया बजे होता। 6 बजे उठ के भी मैं पढ़ तो रोज लेते यही तो बोलता हूँ, इतना पढ़ लिया तो खुद ही हो गया हो जाता था। ऑल इंडिया रैंक 1 में होता। And there are हाँ, many अपने भी फोटो things. लगते। There are many things that I never उस time 7 understood बजे as a दिन शुरू। student. In the subject also. हम्म। In the subject also, there are many things which I never understood as a student, but I understood them as a teacher. Because like I feel that if we know 100%, then we can give 20%. 100%. If we prepare only for 20%, तो we can never बच्चे के लिए भी वही है 20%. कि तुम 5 पेज पढ़ोगे तो बेटा 1 पेज लिख एक पाओगे, Yes. लिख पाओगे नहीं, और एग्जाम। आज के टाइम में क्या है ना, हर सब्जेक्ट इतना डायनामिक हो गया है। एवरीथिंग न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ है। अभी समथिंग इज देयर, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इवन और वो डायनामिसिटी हर टीचर लाता है या नहीं लाता है, वो उस पे चॉइस पे और ये डिपेंड दोनों है। अखबार, हाँ। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वो लिखी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रहे। नहीं, टीचर को अब अगर हम लोग पढ़ना बंद कर देंगे तो ये हाँ। पब्लिकेशन बंद हो जाएंगे। और स्टैटिक पोर्शन भी मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, ऑप्शनल में क्या होता है, बहुत रेपिटेशन होता है क्वेश्चंस का, थीम्स का, बट यूपीएससी आल्सो प्लेज गेम कि कोई ऐसा कंसेप्ट उठा देगी, एक तो जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे हमारे पॉल साइंस में मल्टीकल्चरलिज्म मेंशन नहीं है सिलेबस में, यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया। अंबेडकर को है, लेकिन आज तक अंबेडकर की आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं पूछी थी, अब 2 साल पहले पूछ ली। तो when it throws that thing, the teacher's pedagogy should not be static to only themes that have been asked. You have to be an anticipatory teacher. तभी तो बच्चा तुम्हारे पास आए, वरना why your pedagogy is relevant भाई, तुम क्या आ सकता है ये नहीं बता पाओ तो तुम्हारा जजमेंट। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। हाँ। पहले हम बात करते, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता।
when he started teaching at Vajram, very young age. मतलब obviously teachers are very senior. हम सब काम करें. My first class at Vajiram, and this is why I understand what you're saying is, आप जो बोल रहे हैं, my first class at Vajiram was for the mains batch. अच्छा. Foundation नहीं, mains batch. Ravindran sir is teaching polity, Adha, I am teaching Adha polity and IR. And those are tougher batches to teach. Tougher batches. बच्चा कम अगर टाइम pre में ज्यादा देना है. और बच्चा प्री निकाल के बैठा है, उसको आधी वो चीज आ आपको रही है, ऐसे ही the child will tear कुछ you काम off. का नहीं पढ़ाया. So you have to be very and so that relevancy thing that you're talking about वहां से शुरू हुआ. मैम I remember उस वाजीराम ना संडे को टेस्ट होते थे. अच्छा. प्री वाले, आप प्री वाले एवरी. हाँ उस टाइम मैंने इन्विजिलेशन किया है उन टेस्ट में. अच्छा. स्प्रिंगडेल का सेंटर होता था, वी वो जूनियर टीचर्स, हम काम करेंगे सर, आप बताइए. मैगजीन बनाई है, टेस्ट बनाया है, बुक्स लिखे हैं, इन्विजिलेट किया है. तो and that is why you learn so much. That is why today I'm able to run like a magazine of my own or write a net. मुझे आपकी बात से याद आया कि मैं वो जो रेलेवेंसी वाला पार्ट है, ये चीज शुभ्रा मैम ने सिखाई थी. हम लोग खाली मतलब बाजीरा में 4-5 क्लास होती थी और भागड़ा हम बैठे रहते थे. इधर उधर घूम फिर रहे हैं. तो मैम ने कहा इधर यस मैम, क्या कर रहे हैं, कुछ लॉयर राइट, यस मैम. आपके पेपर पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन 20 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा सा पार्ट है, बेसिक्स, मतलब इट इज सिमिलर टू पेपर 2, पर उसमें थोड़ा सा आई थिंक थ्योरेटिकल एंगल है, डिबेट्स है. तो डिबेट्स मेरे को आती नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल आता है. तो मैम वांटेड मी टू कवर द थ्योरेटिकल बेस. तो मैंने कहा मैम ने जाके पढ़ा. और वो शुभम पैलेस में, मैम वो जो राजेंद्र नगर फ्लावर मिल्स है ना ठेके के बगल में, वहां पे तो वहां क्लास होती थी. एंड आई मीन माय सेकंड ईयर ऑफ टीचिंग एंड आई एम टीचिंग ऑप्शनल विद शुभ्रा मैम. ओके. एट वाजीराम वो 2-4-5 लेक्चर दिए थे मैम ने कि ये कर ले. दैट बूस्टेड एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू मैम. एंड देन मैम दैट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. मैम ने कहा कि अच्छा ये पेपर 2 का जो आईजीपी का सेक्शनल टेस्ट है, इसको ऐसे करेक्ट कर ले. तो पेपर करेक्ट करने सीखे. और पूरा मेरा घर मतलब 4-5 अपने तो दोस्त थे, व्हाटएवर मैम आई एम बिकॉज़ ऑफ पुनीत, संतोष, योगी, these guys, मैम सब बैठ के हाँ आतिश भाई आप पेपर चेक करो, हम टोटल करेंगे. तो पूरा मतलब we are never just product of ourselves. Correct. नहीं, we have किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं बहुत हेल्प. नहीं ये बात है, क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग देखते हैं कि एज अ एजुकेटर उनके पीछे की संघर्ष इनको नहीं पता होता है. कितनी रातें जगना होता है, कितना मेहनत करके तब जाके आज आतिश सर है, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत की है. यू आर देयर बिकॉज ऑफ दैट थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि ये चीज दिखता नहीं है लोगों को. दे ओनली सी दैट डायस में टीचर है टीचिंग देयर, वही पढ़ा रहे इतने सालों से. अरे वही नहीं वो होगा, चीज है. क्योंकि जिस दिन हम इररिलेवेंट हो जाएंगे ना, आप सामने बैठे ही नहीं मिलोगे, आप मिलोगे ही नहीं बैठे हुए. जो डरी उसी बात का नहीं है ना. और एक चीज मैं सर के बारे में काफी मैं मतलब रेस्पेक्ट और बहुत सारा ये चीज है. एट अ वेरी यंग एज ही टुक अप. He is कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से इनकी जिंदगी कर सकते थे, सारा कुछ है. बट डेयर टू होता है ना, डेयर डेविल, कि नहीं इसमें आना है. और वो पता है क्यों? क्योंकि मजा जो होता है ना, कि खुद से इंटरेस्ट मेरे लिए ये चीज है. और आज भी मैं बताता हूँ, अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, he has academic in depth, because he has studied that subject. Like you have studied biology like in and out. आप तो उसमें नहाए हैं पूरा. मैम इज आल्सो थॉरोब्रेड पीएसआईआर एकेडमिक कि बायोकेमिस्ट्री बचपन से. दिस इज नॉट अ एंड इट्स लाइक माय लव. मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर मैं पॉल साइंस नहीं. आई कैन लीव एवरीथिंग दैट कैन ट्रबल मी, बट नॉट द सब्जेक्ट. ये चीज है सर, मैंने देखा है कि ये पार्ट जो है ना, और बहुत जरूरी है कि जैसे स्टूडेंट भी क्या वो सिर्फ सामने देखते हैं, पर्दे के पीछे नहीं देखते क्या है. बिल्कुल. And when it comes to optional, I just want to share another small experience.
When I went to Vajiram for a demo, actually I applied for science and technology. Right. And for me, as I told you, demo was enough. So that I will create some scene in Hyderabad. That was my negotiating, it was a tool. Demo was enough. बदला लेना है. And I requested, sir, at least is one class you give me, so that my internal voice is, I will say there that I taught in Vajiram. So, sir, please, एक class दीजिए. And sir said that we have a principle that we don't disturb the existing faculty. Right. And for science and technology, we already have faculty. Then I thought it's gone, opportunity is gone. Then all of a sudden, sir said, but if you can teach anthropology, then we can consider. Then I said, sir, it's for me, it's like when you open the groundnut, you found the almonds in that. Okay. किस काम से आए थे और क्या हो Very गया? first year, I was directly introduced As an in optional the teacher, optional teacher. which is a very big thing for Big Vajiram. thing. It And, never happens. and the initial strength was like 100 students. 100 students attended a workshop. We conducted a workshop. Correct. Sir said, like if I'm just like students should, like I can only take you till the classroom. But if the students won't accept you, I cannot do anything. Then like we conducted a workshop. Sir said, if the enrollment is less than 50, we will not take because it is a bad reputation to the organization. I was just keeping my fingers crossed that it should cross 50. Sir, 100 to 120 students attended the workshop. 100 students took the admission. That was first year. Next year it was 250. Next year it was 300, 400, 450. And then 4 years later, all other 2019 optional teachers hated Hima Bindu. Oh, man, कितने हमारे senior 2020 male optional teachers थे. हाँ. Aji, ma'am has 1,000 students. What is Stars happening? are cooperating. ऐसा क्या magic है? And sir, 1 second. Last year, 2020, when I left Vajiram, it was 2,000 students in the year for optional. That's really big number. Yes, 4 batches in the year. 4 batches in the year. For an industry which has lesser number of female teachers, the leading optionals at Vajiram were both by leading female teachers. Yes. And but simplicity is the ultimate sophistication. Yes. I've come to realize. आप जैसे पढ़ाते हैं, ma'am, I've seen your notes also. Ma'am, तो we've worked together for almost 10 years. Shubha ma'am ने भी यही सिखाया, Ravinder sir ने भी यही सिखाया. In the next, if you want to survive as a teacher for 20-30 years, you are in the quote-unquote arena of simplification. Very true. You are not in the arena of academic prowess. This is why ma'am is where ma'am is, ma'am is where ma'am is, you are where you are doing so well. Simplicity is the ultimate sophistication. Exam में ये पूछा है, इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे पढ़ते, बात खत्म. And I think provoking thought is also important. मतलब simplicity है, complex चीज को हम बच्चे को समझाने के लिए simple कर देते हैं. लेकिन अगर वो application नहीं सिखाया, और कि ऐसा भी एक thought है, इसमें एक advancement भी है, वो add कर दो ना, तो जिसके पल्ले पड़ा तो पल्ले पड़ा. But as a teacher duty तो है कि ये thought provoke कर दो. भले इनके लायक का नहीं है, but just provoke that thing, signal करके. ये फायदा होता है मैम ऑनलाइन में. You get time to read more, so you're a better teacher. अच्छा. And here I would like to share an academy journey that happened. So 2020 was lockdown. Of course I remember. I was stuck in Hyderabad for 2 months. Me and my daughter were all alone here, so insecure. Then I realized that I should go back to Hyderabad. That was the only reason why I left Vajiram even today. Otherwise, I loved the place, I loved the people there, and Ravindran sir was such fatherly figure. So everything was perfect. 2,000 students in the optional. I had to leave only because like I wanted to go to my native place. I want to live in my place so that I feel secure. Because after all, finally, when I am unable to sleep with with some pleasant mind, there is no use. Then an academy happened to me. Initially, like I was a little bit skeptical, and sir actually steered me towards an academy. So he said that
Ma'am, right now I'm teaching just beside my bed. I can take the class and I can just go. नहीं आतिश सर इज रुकने की भी जरूरत नहीं है, खाना भी मिल जाए. Then like अलग ही अमित शाह बना घूम रहा हूँ ना मैं. he's Amit Shah of and now sir it's been 3 years. Yes. I taught in like first offline Vajiram, that was a great experience. Okay, and then after that online live. I now feel which is better, means I personally feel online live is better. Yes, yes. Because actually like with me personally, I said I was a shy person. 8 years in Vajiram, I never used Hindi word because I was kind of hesitant that yeah, it will become a matter of fun. But in the online 50% I'm speaking Hindi also, and I'm openly saying that okay, this is only to entertain you. My Hindi is only to entertain you. Okay, it may not have any functional significance, either to entertain you or to simplify a few things that you do not understand. So I'm much more open. Okay, and much more like one more thing in offline. I know a few teachers, like if the students ask a doubt, okay, they insult the student directly or indirectly, so that the student will never ask any doubt to any other teacher in his life. Right. But in the online, the students are so empowered that okay, they can literally ask any simple doubt, or otherwise in front of 500-600 students they'll feel shy, maybe it is a nonsense doubt. Correct. And maybe teacher is not explaining it properly, but the students will think maybe I am bad, I'm not able to understand. Okay, the online live education empowered the students. Right. So I confidently tell the students that if you get the teacher of your choice, plus if you are self-disciplined, online is much better than offline in my opinion. That second criteria becomes Two very, factors. very Okay. that accountability. Because postponing, as Matter said, the backlogs goes on increasing. Kal sunenge, that it will pile up some hundreds of classes which you can never and listen. then in the rush they will listen. If you get the teacher of your choice, if you are self-disciplined, online live is far 10 times better than offline in my opinion. Yes. And because they have a chance of listening once again, like there is a recorded video available, they can listen once again if they want, ask any small doubt they want. So I feel online education empowered the students, and they don't have to spend lakhs of rupees on house rent. They don't have to vacate the rooms one day before the prelims. So they don't have to eat the food that they cannot digest. They need not live in that weather that their bodies won't tolerate. But only with the prerequisite of discipline. Those two prerequisites. Without prerequisite of If you discipline, get the teacher of your choice and if you're self-disciplined. सर आपका जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस है उतना मतलब you have done national, you've done regional, you've done online. Sir was telling Kerala, Cairo, सब कुछ. There is no kind of No exclusivity. Sir is not. The only teacher that exclusivity did not bother is Nachiketa sir. Oh my God. No, actually, सर आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू यही है कि जैसे पर्सनालिटी मैटर करता है, जैसे मैम का मैं ऐड करता हूँ. अब मेरे लिए क्या है ना, ऑनलाइन बहुत आसानी से हो गया. Even I am in Parental Mana, Malabar region of Kerala. I can teach through my laptop. I can teach through my. That is true. That is Even that. तो ये एक ऑनलाइन ने क्या किया, एक टीचर को एक मोबिलिटी दे दिया कि आप कहीं भी, आपको नहीं कोई जरूरत नहीं है कि आपको दिल्ली के स्टूडियो के अंदर ही रहना है. यू कैन टीच, यू कैन शेयर योर कंटेंट एनीवेयर. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वहाँ पर है. और दूसरा क्या है कि जैसे मेरा क्या है कि घूमने की बहुत आदत है. अब बहुत लोग इससे मुझे डरते भी कि एक जगह रहेगा कि नहीं रहेगा. ये आज यहाँ कल कहीं सेम प्रॉब्लम. मणिपुर में क्लासेस मिल जाएंगे तो चले जाएंगे. तो मेरा क्या होता है कि मैं कभी जाता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अगर हैदराबाद जाना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, ठीक है हैदराबाद जा रहा हूँ, आई विल टीच हियर. फिर मैं प्लान करता हूँ वहाँ पर, अच्छा ये साइट है घूमने लायक, चार मीनार जाना है, और आई एम ए फूडी पर्सन, मुझे खाना लगता है, तो मैं पता करता हूँ. तीनों में से एक में खाना खा लिया यहाँ पे. तो फूडी कौन Sir, है? I'm with great difficulty resisting it because I'm on intermittent fasting. So don't worry, we are equally foodie. तो चार मीनार Can जाना है. compete you. So even Mia, ईद के so टाइम कब से में, खा रही हूँ. ईद के टाइम में जब भी मैं ऐसे ही प्लान करता हूँ कि ईद के टाइम में जाना है तो वो हलीम खाना है.
हलीम इज हाँ हाँ इस समय हाँ हाँ Yes, हाँ पूरा yes, हैदराबाद में yes, yes, हलीम yes. बनता है। पिस्ता वाला, पिस्ता हाउस का मैम ने couriered लाजवाब, the मतलब halim. इज वेरी But गुड। actually, Shag House Halim is Is more better? better. I used to get it couriered from Hyderabad to Delhi. Yes, and what happened this They time? अरे took the बहुत patent for हम खाने के Halim. मामले में अच्छा, They took इस the बार patent for सर Halim. Yeah. Oh my पता है इफ यू आर लेट वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता नहीं है। मिलेगा वो। मैं तो 7 बजे के बाद गया, वो लाइन लंबी लाइन होती है वो लेने के लिए। And in Ramzan वहाँ पे। season, if you go, हाँ, it's रमजान like season। very Natural. difficult to get हाँ, it. नाउ अभी इस मंथ में मेरा केरला I'm का the plan only है। vegetarian here. हाँ, sir. अच्छा। I have not been eating too for a while also. केरला So प्लान है, something. तो मैं केरला में Persuasion. ओणम, अभी ओणम आने वाला है, तो ओणम में टाइम में क्या है, वहाँ सादिया होता है। Mm. वो एक रेस्टोरेंट है, मदर्स रेस्टोरेंट है ट्रिवेंड्रम में। वो सादिया में क्या है, बनाना लीफ, दे गिव अ लॉट ऑफ फूड, खाने को होता है, वैरायटी होती है वहाँ पर। South Indian तो थाली है। हाँ, तो मैं इसीलिए पता है मैं इतने जगह इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो अपना पैशन है, एक तो है घूमने का कि आई विल गो टू सम नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इवन वेटलैंड। आजकल मैं काफी वेटलैंड कवर कर रहा हूँ, मैं रामसर साइट वगैरह। अब मेरा ये रहता है कि आई शुड कवर ऑल 75 रामसर साइट, तो मैं वैसे ही क्लास में प्लान करता हूँ, अच्छा आज ये जगह जाना है, यहाँ आसपास कौन सा रामसर साइट होगा, तो आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ। And then all that हाँ, experience back to the back class. to the class। और फिर यही जो व्हाट यू से विजुअल, Mm. तो आई प्ले दिस काइंड ऑफ थिंग इन माय क्लास। Mm. अभी जैसे आई वेंट टू साइलेंट वैली, मैं वहां पर हाँ, हाँ, एक जगह मुझे बड़ा बहुत मजा आया थोड़ी देर रोक लो। कि उस जगह अभी पे हम क्या थोड़ी देर था, बाद मैं लेंगे, ये तो खत्म वो हो गया। पार्क का जब टिकट लेते हैं ना, उसके बाहर मकाक का फोटो बना हुआ था, है ना। तो दैट मकाक, बिकॉज़ साइलेंट वैली इज नोन फॉर मकाक, so I took my own selfie with the macaque and I gave a caption, man or monkey, which one is better, right? So just because my subject is like that, environment, like wildlife, biodiversity, you have to discuss all those kind of thing in the class. So I try to bring my experience and learning in the class. तो वो एक चीज वो होता है। हाँ, लेकिन इसके लिमिटेशन ये है कि एज अ फैमिली लाइफ that is it becomes very difficult to balance because with you know children and everything and you are roaming around everywhere, तो उसमें ये भी होता है कि वाइफ को संभालना बहुत टफ टास्क होता है एंड द चिल्ड्रन आल्सो। लाइक अभी क्या है, मेरी डॉटर अभी वो बोल सन इज नाउ एडजस्टेड, वो जब से जन्म लिया तब से देख रही है ये घूमता ही रहता है, तो ही इज एडजस्टेड पर्सन। ये तो बात है, He's elderly. no sometimes because the schools are there, so sometimes I take them there. The son is the elder, he is know that this man is kind of this kind of, he got used to traveling. The daughter is there and attached to father। वो बोले, अब आजकल ये सवाल पूछा जाता है क्लास घर में आते से पहले, मेरी बेटी पूछती है कितने घंटे के लिए आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, how many days and hours you have come। तो ये एक हाँ, this kind of situation is arised। Ma'am, I look at it very differently. Education, teaching, ma'am, is a one-way process. मतलब when you're teaching something, आप बोल रहे हैं और मैम बच्चा आपसे आपकी बात सुन रहा है, वो वन वे प्रोसेस चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन रिकॉर्डेड हो, है वो वन वे। राइट। ये पूरा जो ऑफलाइन में आके बैठना है वो माहौल है। इट इज यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सोशल सिस्टम बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स। वो द सेम थिंग इट्स ट्रांसलेटेड इन ऑनलाइन कि बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लास चाहिए, वो they would be more efficient watching a recording of it. They can increase the pace, they can skip through things that they know, you can skip through, but उनको वो लाइव में बैठना है। तो what is better for the student, honestly, objectively, academically, is a recorded class, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि हम में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हमको क्या करना है, हमको लाइव क्लास देखना है, तो हमको रेजिमेंटेशन आएगा। मैम ये हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री रेजिमेंटेशन पे बेस्ड है, डिसिप्लिन पे बेस्ड है। पर आई थिंक सर बहुत सारे सेंसेस भी एक साथ काम करते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज ऑफलाइन। हाँ, एंड इससे क्या हो जाता है सर, इवेंचुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रिटेनिंग जो होती है वो ऑफलाइन क्लास में ज्यादा इसलिए होती है कि आपको कोई स्कोप ही नहीं है कि कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए। जब आप 2 घंटे क्लास में बैठ रहे हो, आप सिर्फ क्लास में बैठ रहे हो,
उसके बाद कोई you'll go and address the problem. लेकिन ऑनलाइन में अरे कुछ काम आ गया. Not कोई- like that, ma'am. They go for water. They keep in the offline classes also. Teacher is the most disciplined person who will never go out of the class. Students will keep on. They are free to go whenever they want to go. I used to literally request the students, please, like, look at the teachers. They also have biological needs. So we also will feel thirsty. We also will have. But have you ever seen a teacher going out and coming back in the classroom? So that I तो don't. मतलब जैसे there will be scope at least for some breaks. Yes, true. तो but I little feel bit मैम जो possible, but concentration का power जो है ना वो वक्त के साथ, जैसे क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है तो आपको एक क्लासरूम के एनवायरनमेंट में एग्जाम देना है, राइट? It's a pen है and ना? paper test. और that अब is there. that is there. So then when you get used to sitting for 2 hours like that, अब ऑनलाइन में जब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो आपने चेंज कर लिया, आपने आधा घंटा सुना, अब थकान हो रही 5 मिनट, पर एग्जाम में आपको थकान का स्कोप नहीं है, तो इट ऑल्सो बिल्ड्स दैट रेजिमेंटेशन समटाइम्स इज इम्पोर्टेंट टू इनकलकेट सर्टेन वैल्यूज. Correct. We are not doing regimentation because we want to do regimentation. It is an instrument. The end is that why we are doing it. We're doing it because one day you'll have to face that exam in those 6 hours. दिन के 2 पेपर लिखना है. अगर आपको अभी से टिका के बैठने की आदत नहीं है तो आप कैसे करोगे? ये फिजिकल ट्रेनिंग वाली बात होगी ना. हाँ. You're basically training them in a Yeah, certain but manner. physical and the mental process also going alongside. कि आप 2 घंटे सिर्फ एक काम पे केंद्रित होके वो कर रहे हो. So I feel मतलब ऑनलाइन हैज इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसमें ना जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन तो भी ठीक है कि अब मेरा मेंस है, मैंने ये वाले पोर्शंस कवर कर दिए, इतना मुझे आता है, इतना इतना मुझे देखना है, सो दे कैन रीड्रॉ, दे नो व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज नॉट. पर जो एकदम नए बच्चे हैं, राइट, तो आई फील स्टार्ट विद ऑफलाइन वंस यू गेट अ सेंस ऑफ जजमेंट. अब इसमें वन मोर थिंग कि ऑनलाइन अगर कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट में है और सचमुच वल्नरेबिलिटी है, कंडीशन ऐसी है कि वो ऑफलाइन आके पढ़ ही नहीं पा रहा, तो उस बच्चे के पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है और वो ऑनलाइन कर रहा है और डिसिप्लिन इनकलकेट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, डिसिप्लिन करेगा. सो वेयर देयर इज नो अल्टरनेटिव वी कांट अप्लाई दिस कंडीशन. बट जहां तक अगर आपके पास चॉइस है और आप इस चीज को कर सकते हो आके, तो आई फील द ऑफलाइन, क्योंकि टीचर के साथ बात करके जो करेक्शन होता है ना, समटाइम्स even avoidance of like you don't have to become perfect, but avoidance of mistakes is also important part of learning. और वो जो यहाँ आके सीखते हैं, आंसर राइटिंग पे फीडबैक लेते हैं हमसे डे बेसिस पे, ऑनलाइन में क्या हो जाएगा, मैंने आंसर दे दिया और मैंने मार्क्स दे दिए और फीडबैक लिख के दे दिया. इफ आई डोंट डू अनदर मेंटरिंग कॉल तो मैं एक्चुअली समझ नहीं आएगा कि तुमने गलती किया. लेकिन ऑफलाइन बच्चा इजी एक्सेस है, मैं उसको 4 बार प्यार से मुंह पे समझाऊंगी तो बच्चे को ग्रास्प जल्दी हो, सो लर्निंग बिकम्स एफिशिएंट. Ma'am, generally how you take the break? Like normally from classes, like once you have classes there, so then do you plan any holiday trip or something? Holiday trip, yes, sir. Like I usually plan the classes till March, अच्छा. and usually April, May अच्छा. I don't teach. अच्छा. Yes. That's April, May is I think बहुत big time होता है. Yeah. Science and technology and True, but because maybe sometimes if current affairs UPSC classes cycle are is like like that that. is okay. But regular batches I don't take at least. because I have more demands that time only. हाँ, Take science क्विक and रिवीजन current क्लासेस. affairs और I कई बार बहुत दिक्कत होता है मैनेज करना because so many demands as a freelancer everybody will start calling That you is that time. freelancer is difficult. Very difficult in that case कि वो सब लोग कॉल करने लगते हैं कि सर अभी क्लास चाहिए, ये चाहिए. Yes. बहुत In manage this करना connection, I मुश्किल have a small Right. experience. As I told you, 2012, होता है. I was a freelancer. I used to work in some 15 total 15 and at a time some 3-4 institutes. So like the day used to be so hectic. One day, like this Telangana Study Circle people, they wanted me to take the classes, but the day was full. And Telangana Study Circle is a residential place. So like I told them that the only time I'm available is midnight, 11 to 12. Right. So like for few days, for around 1 month, I took the classes in the night 10 to 12.
12 o'clock I used to say good morning to the students, and then I slept in the girls hostel there. Next day morning 7 o'clock again I went to the next coaching center. So this was like my program first integration is very good, that way. I think it really helps. वो जो राजेंद्र नगर में बच्चों को डे बेसिस पे प्रॉब्लम होती है ना, अगर यही मॉडल यहाँ पर रेसिडेंशियल कोचिंग के साथ होता but है at this तो scale बच्चे it is का very difficult. At the scale Yeah. here with thousands of students, it is very difficult. very difficult because If we are there living in 100 an to urban 100 area. students, it's okay. But, So later with the time, like I kind of the time came into my control, and in Vajiram also 2019 I had 2 simultaneous total 4 batches of optional in the year. So 2 optional classes, 1 GS class. It means around 8 to 9 hours of teaching, talking. So the days were totally out of my control. But after that, gradually I could achieve some control over my timings and my number of classes. So that is where I can say a little bit of success brought me there, where I can say that this is not possible, I cannot take this class. सर आपका दिन कैसे How do you manage कैसे पूरा साल work-life balance? There is no work-life balance. There's only work. There is Or no- either there's life. But Can't as I be know, both. sir takes very few classes. He keeps the things under control as I. हाँ ma'am, I'll take very few classes because I will be reading up. I have this weird sense that I don't know that I have a CSR responsibility without having any CSR responsibility. तो मतलब because मैम ज़्यादा bonds नहीं है तो मतलब basically पढ़ने में बहुत मजा आता है. And then you're reading, you're writing, you're updating, and generally what happens is that my Unacademy basically is your primary. It is one of the primary things that you're doing apart from. I run an own portal of mine and all of that. वो घंटे पूरे करने होते हैं मैम. वो घंटे पूरे नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे. घंटे मेरे से पूरे नहीं होते, पैसे मुझे मिलते नहीं है. वो इसलिए नहीं, मैम पढ़ाने के लिए नहीं है. मैं अगस्त के महीने में गवर्नेंस कैसे पढ़ा दूं 2024 के लिए, क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है. मैं अक्टूबर के महीने में आया क्यों पढ़ा दूं 2024 के लिए? For me, relevancy is a very big, very it's a moral obligation for me. तो उसमें थोड़ा सा in that sense there is a little bit of a work-life balance in the sense that teaching actively may not be that much, but everything else goes on. There's law, there's a lot of these pro bono cases, there are a lot of website pay. I write my own content, I write my own magazine. For the last 25 months, I've been writing my own current affairs magazine every month. Every month. Yeah. And all or only polity? All subjects. Right. Oh my God, that is tedious. I have got a team to do like a ground research on it, but it all comes together, and I exist because of my team. Like there have been so my head of content is a guy called Hima Bindu, who's like done great work with me. Admin is completely handled by the girl called Gunisha. वो पूरा they take care of the portal part of it. But for me to read and for me to figure out क्या चल रहा है, and जैसे means चल रहा है मैम right now, I'm doing a mains Magna Carta and I do a pre-Magna Carta. To prepare for mains Magna Carta takes, as ma'am is saying, 3 months. Very difficult. You have to plan in advance. And it's अगर a आपको full figure crash नहीं- course. It's a full crash course. For me to get 18 out of 20 questions in the mains from that crash course, it will take 3-4 months of work. No doubt. And that is mind-numbingly stressful. And that is the kick. So deliver only when we can deliver. Deliver. Rather than just for the procedurally deliver. Medicine. We can deliver and make it productive. 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 At least some value Otherwise, addition that has 3 classes or that few classes, we can even do some time pass and we can manage it. But if we manage, it is a life of the students. Exactly. उनका they will come also Yes. by obligation कि कुछ पढ़ाया जाएगा और वो class भी productive value addition नहीं हुई. At और least it question should नहीं not be फंसा. counterproductive. The money I have lost by not doing my hours. Because अरे जब पढ़ाने के लिए है ही नहीं, relevant है ही नहीं, क्यों पढ़ाऊँ मैं? नहीं सर, views. Maybe I'm coming from a point of privilege that because I have some saved up, so you don't have to worry about it. Or maybe because like I don't have responsibilities, like you have to
keep things running, so मेरे लिए इतना नहीं, but maybe मेरे लिए ठीक है, कम बुरी आदतें कवर हो जाती हैं जितना पैसा मिलता है उसमें। So I think that is that. एक वो मुन्ना भाई का सीन था, वो जब वो MBBS वाला, जिसमें वो that वो जो डॉक्टर बमन ईरानी is addressing that open lecture and he says, ये मेरा हाथ है, आज तक नहीं कांपा, but if I am operating on my child, it'll because there's a bias, there's an attachment. ये सब्जेक्ट है, ये हमको सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। इस जर्नी में we can make the student fall in love with the subject, we can make the student obsessed with the subject, but the end game is marks आने चाहिए। That is the only thing that I do. अगर मुझे एकेडमिक ही बनना होता तो मतलब चले जाते ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने। I think the biggest identity crisis that we as teachers have collectively, कि हम सबको लगता है कि हम एकेडमिक हैं, we are not academics. So let us stop kidding ourselves that we are academics. Optional is very close to being an academic because your syllabus is of a postgraduate level. Yes. But then again, I also feel, sir, like academic के साथ मतलब जैसे कई चीजें मैं अगर every time I will expand my source with every batch. अब मैं expand करती हूँ, पर मुझे पता है कि वो बच्चा उस चीज को absorb नहीं कर पाएगा, तो मैं वो क्लास में उस चीज को नहीं छेड़ूंगी। एक बेसिक स्ट्रक्चर से आई विल डू दीज थिंग्स जो रिक्वायरमेंट है। तो एकेडमिक के साथ आपको नुआंस वही जो सिंप्लिसिटी तक आना है, ठीक है, वो गेम है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा लिया एंड आई अज्यूम कि उसको याद हो गया। सो बिफोर एवरी क्लास आई विल रिवाइज द लास्ट क्लास। 15 मिनट की मैंने हैबिट बनाई हुई है कि भले मेरा सिलेबस थोड़ा डिले होगा, बट 15 मिनट में आपको कैसे याद नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो वीकेस्ट है, जो घर जाके नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उसमें भी हैबिट ऑफ रिविजन, डिसिप्लिन इनकल, फिर उसको मजा आएगा कि हाँ क्लास में सब याद हो जाता है। तो ये छोटी स्कूल लाइक मेथोडोलॉजी है, बट आई फील आई हैव टू एड्रेस इवन दैट वीकेस्ट स्टूडेंट। नहीं ये बात तो है, और हर किसी का फीलिंग लाइक हियरिंग माय सेल्फ। नहीं बात बिल्कुल सही है। मैं मतलब टीचर्स में पॉलिटिक्स है ना, बहुत इट इज सो रिपल्सिव, बहुत ज्यादा। सर ऑर्गेनाइजेशंस में भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा। as me and ma'am as women, हाँ कमेंट नहीं एक चीज और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर विमेन एजुकेटर देखें आजकल ज्यादा हो गए। आज से 10 साल पहले नहीं थे उतने। relative मैं रिलेटिव बता रहा हूँ। नहीं मैं मतलब 10 years back I will remain quiet for the next 5 minutes. Let me understand and then we'll talk. नहीं 10 साल पहले की बात है। I have gone to so many places. But now Hyderabad, Bangalore, Chennai, Delhi, women faculties have come up. And they're really doing very good. Yeah, online, offline, that's सारा, and that's really a big change has come. वो बहुत बड़ी चीजें मैं अब आजकल देख रहा हूँ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और उसमें भी क्या बात है ना कि पहले ये भी था कि बहुत सारे लोग आते नहीं थे। नाउ वी आर फाइंडिंग नंबर ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू बिकम एजुकेटेड, है ना, दे आर कमिंग फॉरवर्ड देयर एंड डिफरेंट सब्जेक्ट, नॉट वन सब्जेक्ट, different subject. Like in Wajiram only, like when after I left this Brushali Anand, she started teaching the environment there. That again, she was a student of Sabir sir, who took up the part of it. Yes. उनकी किताब भी है। हाँ उन्होंने मैगोलिल का वहाँ किया है। तो ये सारी चीजें बदलाव काफी आ रहा है ना। बहुत सारे अनअकैडमी में कई लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। Is the industry women friendly? हाँ ये relevant question है। Then I will take it up. I will surely take this question. It's an interesting question. When it comes to online, I did not experience any difference because I'm teaching from the comfort of my home, and I never felt like I'm a woman, so this is happening. But when we teach offline, say like in a faculty room where all are male faculty,
Right. I was the only female faculty sitting there. Right. So like have a kind of a hesitation if I talk Mhm. too much, that may not be taken right. Or if I Mhm. don't talk at all, then maybe labeled as very reserved or probably arrogant. Okay. गलती Right. हमारी थी. So It was our fault. Yeah. For 10 years, मैम हमारे साथ स्टाफ रूम में बैठे हैं. Mhm. It is हमारी responsibility है that To ma'am engage. feels comfortable and she does not feel out of place. मैंने आज तक नहीं देखा unless for a few times, but there has been some passing conversation a senior male teacher has made with ma'am. Yeah. So ma'am used to come, sit. I remember ma'am का वो computer पे she used to sit. there was only one computer in the Staff room. staff room. I always used to sit in front of the computer. Yeah. Mhm. 50% times to prepare, 50% times not to feel odd. Mhm. Yeah. Okay. ये हमारी गलती है. Because like sir, when you are not successful, Right. it is taken as like she's unsocial, she cannot talk. Mhm. When you are successful, it will be taken as arrogance. Mhm. So when you do not talk, these are the two perceptions. And luckily or unluckily, I faced both, not only in the teaching field. When I was not at all successful, okay, then my like kind of reserved behavior was taken as incapability to interact. Mhm. And when I became successful reasonably, then it is taken as arrogance because Arrogance like of she that. has so many students and all that. Mhm. So if I should not be like perceived either as incapable or as arrogant, then I should look into the computer. Right. So for 10 years, I was like only facing that Facing computer, computer in the faculty room, Mhm. and 50% times for preparation, 50% times to avoid the awkward situation. नहीं नॉर्मली सर ऐसा भी हो रहा है ना. आज से पहले हम देखते थे बहुत सीनियर फैकल्टीज हैं तो उनका एक अलग थॉट प्रोसेस की बात है, लेकिन अब आजकल हम देखें ना बहुत यंग फैकल्टीज वगैरह भी आ गए. अब उनका वे ऑफ बिहेवियर बहुत अलग है. What about you? You've joined now. आपको 5 साल हो गए, 4. How's it going? So like I'll say in terms of merit, the industry is equalizer. Merit मतलब आपका कहीं पे भी जुगाड़ से काम नहीं होगा. Even if you are a woman, okay, it will not work. You have to prove your capability. तो जहाँ मैम मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है, it has always been very fair in terms of merit. So the procedural thing is very nice in the industry कि students have been there, feedback लिया गया और but the enabling condition in work culture practice has been little awkward and challenging. Like ma'am said, 50% times. मैम बाजीराम में फीमेल वॉशरूम कहाँ था? No washroom. That was I was about to say. No female washroom. No बाद female का washroom. बाजीराम में फीमेल वॉशरूम नहीं था. कितने साल? 10 साल जब 10 तक my आए थे. God. And ma'am, if I had to use washroom, in between the classes, there will be 15 minutes time. Oh my So God. there are many times by rickshaw, because like I'm basically based in Hyderabad, so I did not have any car or any established Right, right, facilities here. Hmm. So in rickshaw, quickly I used to go home and come back. Oh my Many God. times it was like that. नहीं ये बहुत जरूरी है सर कि अब जैसे मुझे क्या लगता है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी जो हैं And they in should this have connection, this kind of thing there. yeah, in this connection, one more small point. Like this issue was there in Vajiram. There used to be only one washroom. Even for males, it was uncomfortable because it was only one washroom and 30-40 faculty used to be there. So It was a team of I'll 40 faculty. also add here. हाँ नहीं just Please, And, please, sir. irony is that I go to so many places now. Even you don't find any separate washroom for faculties. You have to go with the students. So in that case, Vajiram is another much thing. better. There's another kind of race. सर डाउट Sorry. सर अभी कुछ नहीं तेरे 5 मिनट नहीं हो रहे थे. And So ma'am, please finish. in this connection, like recently a co-faculty told that so and so some institute is much better. They have so many washrooms for
they have an attached washroom where I felt so an academy gave me an entire attached my home behind me. So I'm sitting right in my home and I'm teaching, so I don't need an attached toilet now. ये पक्का नेक्स्ट ने बोला होगा, ये पक्का नेक्स्ट ने बोला होगा. Next is very infrastructure friendly. They've got brilliant infrastructure. That way they've got very good. So like talking about the enabling condition, तो मैं सही था ना मैम? Sorry. ऐसे नहीं. Yes, sir, Awesome. Awesome. So there is this problem कि हमारे work culture practices में period leave है ही नहीं. हाँ हाँ. अब मुझे अगर पीरियड के लिए लीव लेना है तो मुझे उस पूरे टीम के ग्रुप में डाल के ये बताना पड़ रहा है दैट आई एम गोइंग थ्रू अ पीरियड और मुझे लीव लेना है. तो होल ऑफिस इज नोइंग माय मंथली डेट्स. ठीक है. एक सो समटाइम्स एडमिन में ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली क्यों अराइज होती है कि लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. या तो फैकल्टीज है या फिर रिसेप्शन है या कंटेंट टीम है, बट मैनेजमेंट में कितनी वुमेन है? अब जो मेल है ठीक है, तो वो मेल है तो अब उनको कहने में सिंगली नहीं कह सकते ना कि यू हैव टू पुट इट के कौन से दिन क्लास होगी, क्योंकि आपको दूसरी टीम मेंबर्स टेक्निकल टीम को भी, सो द होल ऑफिस विल नो. अगर एक फीमेल होती तो शी कुड हैव जस्ट सेड मैम्स क्लास विल नॉट बी देयर टुडे, इट इज कन्वेड, but I have to put it to the whole team. Second, sometimes attitudinal problem. Like I had some former employer somewhere. So I had a very severe medical condition which I could not tell. तो मैंने छुट्टी ली और कहा कि medical crisis है. So like I will not be able to take the batch from this week. We will start next week. And then I came to class after the week. And it's like, how can you do it? So I said, I have a medical condition. You look fine externally. But मैं क्या बताऊं internally क्या क्या हुआ? अब इस चीज को express तो then they are like, ma'am, this is the last batch that we want to do with you. No continuance after this. कि आपने मुझे बिना बताए, तो मैंने कहा सर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में मुझे विस्तार नहीं करना सबके सामने. I want to keep it to myself. तो आपका राइट है ना? तो बोले कि आप बढ़िया तो दिख रहे हो मैम, खड़े हो. एक हफ्ते के बाद आप यहाँ खड़े हो मेरे सामने. ऐसी कौन सी ऑपरेशनल प्रॉब्लम आई? सो इफ देयर वाज अ फीमेल इन द मैनेजमेंट, ये चीज तो आई फील कि हमारे यहाँ पे भी बहुत डिविजन है हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो हो गया और हम इकोनॉमी में भी आ गए, लेकिन हर लेवल पे जब तक वुमेन नहीं होगी. अब फैकल्टी को भी देखिए, आप हर इंस्टीट्यूशन में 20:2 का रेशियो देखेंगे. अगर 20 की टीम है, 2 औरतें हैं फैकल्टी, 2 देख लीजिए आप. नहीं, और मैं जस्ट ऐड करता हूँ, आई गो टू केरला फॉर क्लासेस. केरला, यू नो, द इफ यू लुक एट सेक्स रेशियो, women and men, women are more than men. If I'm teaching in a classroom, there will be 80% will be women, 20% will be men. 80% girls and 20% boys. Even there I found in the management run by only male. I don't find a female. वो कोचे alchemy करके कुछ. हाँ, alchemy करके गया वहाँ पर. और एक जगह मैंने कहा कि मुझे पीरियड लीव चाहिए, बोले मैम ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, दूसरी फीमेल टीचर्स भी आ रही हैं. उस दिन आप मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है, एंड दैट डे आई कैन नॉट टेक क्लास, दैट वन डे यू विल हैव टू, कभी हुआ तो यू विल हैव टू स्पेयर, कि मैम ऐसा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, एवरीबॉडी इज टेकिंग क्लास, आपको भी लेनी पड़ेगी. सो यू नो इट्स नॉट टू टॉक अबाउट इट ओपनली, बट द आइडिया इज दैट you have brought procedural changes everywhere in society's level, in family, but enabling conditions tumne लाई. Have you given us that representation where we can openly talk of our problems? And this applies at this procedure and enabling idea applies even at home. तो हमने आपको वर्क करने के लिए अलाउ कर लिया है, we are progressive, but कभी आपने like I felt this change. Like before marriage, my family was my buffer. मतलब कोई भी सोसाइटी से प्रेशर आता है. I didn't get married till 30.
My father would handle, my mom would handle. वो पढ़ रही है. My grandparents expired. I did not go because prelims था एक हफ्ते में. So I could not go. But they handled that pressure. But after marriage, this will change. So the procedural condition is met कि आप काम कर लो. लेकिन as a woman वो confidence ही नहीं दिलाया जाता. बेटा आप आराम से काम करो. जिसको जो बोलना है बोलने दो. हम देख लेंगे. ये इन लॉज में अगर ये पॉजिटिव चेंज आ जाए फॉर द डॉटर इन लॉज, उसका मनोबल, उसका एंथुजियाज्म, उसकी सिक्योरिटी, उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा. तो आपने ये तो कह दिया कि आप काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हैव वी ट्रेन्ड और टोल्ड आवर सन्स कि आप हाथ बटाइए. एंड ऑलवेज दैट प्रेशर ऑफ मैनेजिंग द वर्क, द फैमिली एंड द सोसाइटी. मीन्स सोशल्स भी अटेंड करो, आप घर भी मैनेज करो. ये तो बेटा करना पड़ेगा ना, लेकिन आपको वर्क के लिए अलाउ है करने की जरूरत किसने. एंड मुझे सो ट्रू मैम, इफ आई प्लीज, इतनी सेक्सिस्ट इंडस्ट्री है. बिल्कुल. मतलब इन द सेंस द रिसेप्शन में सब औरतें चाहिए. हाँ, रिसेप्शन में सारे चाहिए. रिसेप्शन में सब औरतें चाहिए बिकॉज़ सारे वो. मैम द रीजन the biggest of the places will have women receptionists. Why? Yeah, it reflects pink that collared job. pink collared job. It reflects a sense of, oh, women receptionists will therefore present a more welcome. अरे यार, यहाँ तुम्हारा आप sexism तो दिख रहा है. मैनेजमेंट में आप देख लीजिए गिन के लोग हैं हायर पोजीशंस में. बिल्कुल. And actually teaching is a pink collared job, but UPSC teaching we have very few women. So it means what higher level women are not trained. No, I have a suggestion, ma'am, to sir also. All coaching institute in future to become gender neutral, they should put a robot in the place of that. Now AI has come up. Artificial intelligence has come up. Humanoid has come up. That's really I'm saying that. Employee welfare, our industry is one of the worst in the country. That is true. Worst. मतलब I will always give credit to Unacademy where it is due, because it's due in very few places. But where it is due, it is due. They will take care of their teachers very well. Very well. It's been 1 week for me, 2 weeks, sorry. मतलब life insurance, But yes, medical insurance है. I feel very medical good. insurance, ma'am. I didn't use it. हाँ, है, but कल को जरूरत पड़ी तो we have medical insurance. You have medical insurance not only for you, but your spouse, your children, your parents, if you want to get them involved. The value might be nominal, the value might be less. There will be some terms and conditions. But ma'am, for 10 years, for 12 years, we've all worked. Where did we have medical insurance? And Nothing. during COVID also, they literally did a lot of work. They conducted vaccination campaigns. सब कुछ था. They arranged beds for some Teachers, faculty yeah. they needed hospital beds during That the was, second I will wave. always be grateful to them. So, Which is why I don't give them a hard time enough. in my Because case, I'm yes, grateful to them in many ways. Ma'am, how is it like, I mean, you know, personally being a woman, how do you manage this family, societal pressure and work? Means, I find it very pressurizing because I'm expected. And then, you know, there's this problem with no name. Like, after some days, I feel guilty कि सिर्फ काम ही कर रही हूँ. मुझे ये भी करना चाहिए. But men don't have this problem. Men have different sort of problems. And I used to see, Right. like in Vajiram faculty room again. So for all the male faculty, they got educated wives. Acha. So if the wife is educated, not only managing the home, she can manage the tax payments, she can manage the bills payments, financial, everything they can manage. So they just had to come teach here and go. But for me, I have to take care of my daughter's education, I have to take care of my finances. Basically, I have that womanly inflictions, so I don't have much financial literacy. I don't know about the tax payments. I don't know how to manage the taxes. Even our direction problem. Correct. So On the Google map. Yeah. So I had to learn about the financials. I had to take care of my daughter's health, my daughter's education. And there were many times, like when I was taking a class in Vajiram,
one particular day, my daughter was on 104, 105 fever. Oh. So I just requested some of my previous students who were very close to me, like kind of they became sisterly to me. So they were sitting in the home with my daughter, and I used to come to the institute and I take the classes with all the broad smile on the face. Yeah. Because we also have a responsibility of being influencers now. We also have a responsibility of being entertainers now. Teaching is now seen as a performance. It's a performance now. Yes, it's a performance. So like my खाना daughter नहीं was खाने के having मामा Stage management. No, Ma'am is that's intermittent अभी fasting. मुझे एक मूवी याद आ गई. Stage management. राज कपूर मूवी था ना, मेरा नाम जोकर. yes, That yes. Joker I has remember to that. I Joker remember has to that. perform. Joker always has to say has to ki, smile even and if there is a yeah, lot of pain. Sometimes, sir, like हाँ. my daughter traveled in the flight alone when she was just 9-year-old. 9-year-old. Yes, yes. And when my daughter was in the flight, I was in the classroom. I was feeling like tracking the flight. Right. Because now you can even track the flight on the phone. Correct. But I cannot use the phone. Yes, sir, that's what. And the students are asking the doubts and same smile. My daughter, 9-year-old daughter is in the flight. I'm in the classroom. Same broad smile. So I really remembered that Joker movie only. Yeah, sir. that's the Joker Yes. movie. That. सर आप घूमने जाते हो तो आपको ये फील नहीं होता नहीं, ये होता है, बहुत होता है सर I'll tell you similar line of there. 2016 only. That time I was teaching Wajiram. My daughter, she was just I think 2 years old. She got a pneumonia. My God. And we admitted in BL Kapoor Hospital. So that time, but thankfully my wife is also a teacher, school teacher. She was managing and I was taking the class also there. But that situation, I still recover. Like as you told, na, your daughter, immediately that memory came to my mind. The moment you talk to the daughter, that memory came. तो होता है, मतलब कई बार क्या होता है, मेंटल और फिजिकल. देखिए, जब आप बाहर जाते हैं, एक जगह पढ़ाते हैं तो आपका एक स्टेबल लाइफ होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, आप परिवार को टाइम दे देते हैं. बट व्हेन यू आर गोइंग एवरीवेयर ना, मेनी प्लेसेस, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है योर पर्सनल लाइफ, राइट, दैट इज अनटच्ड. यू विल ओनली टॉक फॉर सम टाइम, बिकॉज फोन में तो आप इवन क्लास के बाद भी कंटिन्यूस बात नहीं कर सकते. आप हाफ एन आवर बात करेंगे, 1 आवर बात करेंगे, आपकी थकान भी होगी, यू विल आल्सो टेक रेस्ट. और होता क्या है, इवन व्हेन यू आर टीचिंग आउटसाइड, even after the class you will have some other engagement. Maybe the director of the institute want to take you to a dinner or somewhere you want to go around. नहीं, आपने तो बोलने लगे कि आज तक वो साल में आईमेट होता था डिनर, उसमें भी गुलाब जामुन नहीं देते थे. तो ये प्रिविलेज होता है कि ये आउटस्टेशन होता था, जब you go there the director will take, कुछ नहीं होता. तो उस केस में क्या है कि आप फैमिली ज्यादा बात नहीं कर सकते. I remember those annual dinners. Yes. There is one dinner. Vajra will have that one dinner of all faculties every year. उसमें वो कोफ्ता देंगे, गुलाब जामुन देंगे और वो रूह अफ़ज़ा दूध डाल के देंगे. ओके बाय. वहाँ पे इंटरेक्शन होता है. हाँ, that is the only time everybody meets. No, one thing I noticed is people actually interact. In the faculty room also they talk a lot, but nothing personal. Everything superficial. So there is nothing like... Yes, sir. The senior teachers, the senior male teachers are creeping because their time is gone. Gone, yes, sir. They're like, why are the younger teachers being paid? Yeah. We have built this. You are just on our legacy. Nobody gives us Stars power. are cooperating. Stars are cooperating. Yeah. The junior teachers are like, why am I not getting more money? Why am I not getting more classes? Yes, sir. Everybody, like, how it's in the services, right? IAS is unhappy because politician is happy. IPS is unhappy because IAS is not, he's not IAS or she's not IAS. IRS is not happy because she like, everybody's unhappy. अपने में भी यही है. ऑनलाइन टीचर दुखी हैं क्योंकि ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं. ऑफलाइन टीचर दुखी हैं क्योंकि ऑनलाइन में नहीं पढ़ा रहे. अरे यार भाई, क्यों दुखी है? क्या मतलब? अरे मैम, इट इज बिकम सो टॉक्सिक, व्हिच इज व्हाट आई वाज कमिंग. इतना टॉक्सिक हो गया है, जैसे एटलीस्ट बाजीराम और जनरली मतलब जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में टीचर पॉलिटिक्स इज वेरी कंटेन्ड. स्टाफ रूम में हुआ, यू गॉन होम, इट्स डन. And Ravindra sir had a very interesting management style. He will do one-on-one teachers. वो कभी बिठा के ऐसे मैनेजमेंट में ऐसे नहीं. Unacademy is blind.
because everybody is online. अच्छा So you have those, interactions here or there of some kind. और भी शाम के लिए भी कुछ खिलाई तो घर के लिए पैक भी करने के लिए दे दो. मुझे मत मैम ने कुछ नहीं खाया है, ये मेरे को पैक करके दे रहा, मैं रास्ते में खाऊं. तो नहीं. अनअकैडमी दैट वाज इज nobody knows everybody. तो एक दूसरे के स्क्रीनशॉट जा रहे हैं, ये उसने ये पढ़ा दिया, उसने ये पढ़ा दिया, ये क्यों कर दिया, ये ड्रामा बहुत है. बट एवरीबॉडी इज फंडामेंटली अनहैप्पी एंड पीपल आर फंड. अरे नहीं मैं बाहर का, अभी नहीं अच्छा लगेगा ना पॉडकास्ट. सर को दे दीजिए आज बाद में. तो सर यू आर फूडी, नो यू हैव टू प्रूव इट. They are testing my patience. अब सब रख दिया, मैं स्टार्टर रख दिया, she will break down. Sam will still smile. Exactly, यही तो चाहिए. I think it is high time that UPSC teachers should have more of, they should talk to each other more. Like, ma'am, a lot of our senior teachers helped, so we are doing a little better. So we should also help the junior ones. Yes. आजकल तो बच्चे इतने क्यूट हो गए हैं, वो कहते हैं सर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, आपके नोट से पढ़ा रहे हैं. हाँ बताते हैं. ये आवाज जैसे रीजनल सेंटर्स में जाते हैं, बोलते मैम छोटी सी क्लास है, थोड़े बच्चे पर आपके नोट्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं. ये बात तो मैंने सुनी हुई है. So they are doing well and it is our responsibility. We should not be threatened by it. correct Because सब कुछ चल रहा है ना. मैम बहुत बार क्या होता है सर कि मेरे पास साइंस से टीचर रिक्वायरमेंट होती है, मैं नहीं जा सकता, मैं रेफर अदर्स की, जाओ पढ़ाओ, लेट देम गो अप, है ना वो चीज है. सर जब अब घूमना होगा तो आपको फोन किया. हाँ बिल्कुल. तो मेरा क्या है कि गोवा में कुछ करवाइए कोचिंग. गोवा में कोचिंग, उत्तराखंड में करवाइए. उत्तराखंड में जरूर. सर लद्दाख. लद्दाख. There is one coaching center in Jammu Kashmir, so I would like to work एक there. पॉडकास्ट वहाँ भी होना चाहिए. एक पॉडकास्ट लद्दाख वहाँ होना लद्दाख चाहिए. Seeing this ऐसे पूरा- podcast, please invite me. लेकिन पता है एक चीज होना चाहिए, पता है ये अभी तक किसी ने मतलब ट्राई नहीं किया है. There has to be this UPSC Coaching Teachers Association. Wow, that's a good idea. रेगुलेशन भी आना चाहिए, एक जो हमने हमारा पहली बात यूनियन की. होना चाहिए. यूनियन होना चाहिए. सच्ची बता Demand- पर पहले हम यूनियन तो हो जाए. यूनियन तो हो जाए. यूनियन तो हो जाए. We कोई rise यहाँ पर कोई beyond unity that नहीं है. competition and अगर ये करके कि बन जाए ना, करेक्ट. it will be a game At least fair pay, fair provident fund नहीं है, health insurance नहीं है, guaranteed leave. आप कोई for women there is no formal concept of a maternity leave. There is no formal concept of maternity leave. even period leave, please add. That was I was wondering when you were saying about period leave. There is no Yeah. maternity Leave. leave. तो नहीं ये होना चाहिए, क्योंकि पता है लेकिन इसमें यही है कि दैट व्हाट सी हैज सेड, यूनिटी नहीं है. तो ये यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे सर ने आपने बताया लॉयर्स के लिए होते हैं, लॉयर का बार एसोसिएशन होता है, एंड देयर यू हैव मेडिक्लेम टू व्हाटएवर यू कैन गो फॉर इट. लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, वी डोंट, वी आर लाइक अ दिहाड़ी लेबर. काम करो दिहाड़ी पैसे है. लो, बस यही कोई बस टैग टीचर का है. इतना रिस्पेक्ट. but in a way that is the case. In a way it is essentially P-switch. And which is why I think we should close also कि कुछ चीजें ना जिंदगी में बहुत याद रह जाती हैं. बिल्कुल, कुछ बिल्कुल. बच्चे आपको वहाँ पैक कर जाते हैं. So when you come to places like Josh, you come to realize कि यार people feel normal. राइट. हम सबको वो किक चाहिए. बिल्कुल हम कितना भी रील का मजाक उड़ाए, हम भी देखते हैं. बिल्कुल. है ना, मतलब सोशल मीडिया इज आवर लाइफ रिफ्लेक्शन ओनली. हाँ, हाउ वी आर इन आवर हम दिस सबको दैट, डांटते हैं जो कि अच्छा तुम्हें- लग रहा है वही दिखाया जा रहा बिल्कुल. है. मतलब and students have had such an impact. Like the industries had such an impact. आज I mean today we are all still, हम कितना भी लड़ झगड़ ले, we are still 1% of the country's population. We are, मतलब कॉर्पोरेट में हालत देख लो. बिल्कुल. क्यूबिकल में बैठ के टुक डियर मैम प्लीज रिवर्ट बाय ईओजी. ये तो नहीं करना था ना लाइफ में. Which is why we are all here and पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ हैं. और एक और चीज सर इसमें मैं ऐड करूंगा, द रेस्पेक्ट वी आर गेटिंग नाउ, इट वाज नॉट देयर अर्लियर. तो बड़े मास्टर जी जा रहे हैं, लोग हेजिटेट Which करते I थे कि will always give due credit to Vikas Devakirti sir and Oja sir. यस, As दैट in नाउ in रेस्पेक्ट that- हैज कम अप. अरे हमारे मतलब
यूपीएससी टीचर्स हाँ आर नोन। आज उन दोनों की वजह बिल्कुल, मुझे उन दोनों बहुत की सारे वजह से। लोग कहते हैं, अरे और मैंने वैसे- आपके वैसे- वो ओझा सर है ना, उनका वीडियो हाँ। देखा था, क्या बोलते हैं दिव्या, अरे उनकी फिलोसफी क्या क्या बातें करते, कितना दिमाग है। They tell me this. आई मैम 5-7 साल हाँ। पहले वी गो टू इवनिंग और समथिंग, क्या करते वो somebody will say corporate lawyer, some AVP legal or something. So UPSC पढ़ाते, you know, it has empowered us. Correct. Very happy doing it. Right. And for that we should always be thankful to the students. Yes. Be thankful to the industry. Yeah, industry. वो हो क्या है आज थोड़ा मतलब आजकल टीवी सीरीज बन रही है, बिल्कुल मेरे को एस्पिरेंट से एक ही शिकायत है, टीचरों को बहुत ही मतलब गरीब हालत में दिखाए, इतने बुरे हाल नहीं है टीचरों के। नहीं, कॉन्टेक्स्ट जहाँ से उठाया था वो भी गलत था। कोटा फैक्ट्री एस्पिरेंट्स हाँ। जितने भी बने हैं, ये सारी चीजें सामने आ रहा है कि नहीं, टीचर एज ए ह्यूमन क्रैश कोर्स, ये हाँ। कितना इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। एंड दे आर आल्सो लाइक हीरोज। ये चीज सामने अभी लोगों तक पहुंचा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है सर, नो डाउट। और इसके लिए जो स्टॉक इज डूइंग रियली गुड वर्क दैट यूपीएससी सेगमेंट में ब्रिंगिंग एक पूरा सेगमेंट बना दिया, मतलब हाँ, कितना हाँ, इम्पोर्टेंट है ये डायलॉग, क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारे यूथ है जो इन्वॉल्व। इमेजिन इंडिया में इतना लैक्स यूथ प्रिपेयर कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम्स को बाहर लाया जो स्टॉक्स ने। नहीं, और आज का आई मीन दे शुड गेट द ड्यू क्रेडिट। नहीं, और नहीं, इसके लिए जॉब स्टॉक्स को हम लोग थैंक्स करें। दूसरी बात क्या है, आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स वी ब्रॉट आउट। आई थिंक मेनी इंडस्ट्री ऑडियंस आज विल बहुत सी, फोन विल कॉल आने वाले कनेक्ट। हैं, बहुत सारे बहुत फोन कॉल अभी आने वाले यूनियन हैं। आने वाले सर, अभी बहुत सारी गालियां कोई तो निकलेंगी। यूनियन की डिमांड आएगी। बट ठीक है, नहीं, जो स्टॉक इज अगर टंकी की चोट पे नहीं And चले तो we क्या? spoke about influencers. Correct. So, like through Josh Talks, like we can see a lot of inspiring stories. stories Yes. also, yes, sir. I myself, like when I personally felt a little bit low or a little bit dull, सब I have seen some inspiring Right. monologues on Josh Talks. मैम यू शुड गिव वन इन मैम तेलुगु यू शुड कम। मैम एक तो And बनता है they're very inspiring. फ्रॉम and, दैट बिंदु मैम की स्टोरी से स्टार्ट कर। 7-8 साल पहले की बात है, मैं हमेशा थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके पढ़ाने में बिलीव करता था कि नो सोशल सेक्टर्स को ऐसे पढ़ाना है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट एट दैट प्रतीक करके लगता था, प्रतीक राव इज इन द आईएएस नाउ। आई एम कलकत्ता का बच्चा था, तब वी जस्ट स्टार्टेड टीचिंग साथ, मतलब तो इतने रिजल्ट्स तब आते थे। वो मेरे को लगा आप जो पढ़ा रहे हो अच्छा पढ़ा रहे हो, and because otherwise you know Vajram was very like theoretical and I was doing it a little more differently. मैं उस टाइम पे जब कोई पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहा है तो पीपीटी पे हैंड नोट बना के दे रहा हूँ, और वो तो कैसे सर यू डूइंग इट वेल, आपने ऐसे पढ़ा है, मैंने ऐसे लिखा, जो मार्क्स मिले जो भी है व्हाटएवर। तो स्टूडेंट्स हैव हैड सच एन इम्पैक्टफुल। आरआरके करके एक था वो रेलवेज में, आई थिंक अभी they've changed the way we are. Yes, students, it is all them. Impact. Like it really impacted us so well. Yes. Places like Josh Talks are for them. एक इनको स्टूडेंट पॉडकास्ट भी करना चाहिए, कर रहे हैं आजकल, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट टाइम दे शुड डू लाइक स्टूडेंट टीचर। हाँ, दे शुड डू जिसका रिजल्ट आ गया है, जो प्रिपेयर कर रहा है, बिल्कुल। और एक सबको बैठा दो 10 लोगों को, 10 लोगों को बैठा के ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरा हो जाएगा। चले सर, और करते हैं। नहीं तो कितने स्टार देना चाहिए जो मजा आया। दे देंगे 5 स्टार। There's so many Like new 5 ideas. अगर खाना पैक करके दिया तो 5.5। जो स्टॉक्स हैव ब्रॉट अस Together. Yes. ये सबसे बड़ी बात है। First union started, sir. The idea of a union started here. Germination हो गया। अब मैं हैदराबाद जाके मैम के घर में बिरयानी खाऊंगा। सर मुझे आपके साथ कोई रामसर साइड पे आना है। कोई रामसर साइड में नहीं जाना, मेरे कोई ऐसे। Sir, to have my home biryani, you can try in Delhi also. Exactly. Because चले चलते हैं। okay, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you. बहुत मजा आया। बहुत मजा Nice आया। being here today. 3:15 बज गए। थैंक यू। बातें करते करते गप्पों में We started talking even before Yeah, this yeah, started. Yeah. But it was such a heartfelt conversation. Yeah, no doubt. No, we have covered a range of topics. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में।
तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया KSGIS के खान सर को। शायद खान सर और KSGIS की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।